Mahagathbandhan's deadlock continues. Seat sharing still unresolved. CPI-ML withdraws Bihar candidate list amid Mahagathbandhan seat sharing delay. BJP's first Bihar list of 71 out, heavyweights and mantris in the list. Maithili magic for BJP in Bihar. Popular folk singer Maithili Thakur joins BJP. Prashant Kishore will not contest from Raghopur. Party names candidate. Hello and welcome to Bihar Election Tracker, your go-to source for key updates as the state moves toward a high-stake assembly election. I am Muskan, bringing you the latest updates from the campaign trail. Let's dive into the details. The Mahagathbandhan deadlock continues in Bihar, with seat-sharing talks still unresolved. As the nomination deadline for the first phase of elections draws closer, just 3 days away, alliance partners are yet to reach a final deal, exposing growing tensions within the alliance. Listen into what Congress has to say. अभी हम लोग की बैठक है, बराबर बातचीत होती रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द निर्णय हो जाएगा। देखिए, मुलाकात हम तो तेजस्वी जी का बयान देखे थे, वो दूसरे काम से आए थे। हो सकता है ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ हो दोनों में, ये कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ ठीक है। Amid the speculated rift, the CPI-ML has withdrawn the list of 18 candidates it had initially announced for the upcoming Bihar polls. The first list included constituencies like Tarari, Ara, Dumrao, and Karakat, among others. Senior party leaders said the list was pulled back because discussions are still underway over a few other seats in the alliance, and a revised list, including all the constituencies, will be released shortly. Well, the BJP has released a first list of candidates for the Bihar Assembly elections. The first list has the name of 71 candidates, including that of Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary. Samrat Chaudhary will contest the Tarapur Assembly seat. The seat was won by JDU's Rajiv Kumar Singh in the 2021 by-polls. Minister of Agriculture Vijay Kumar Sinha, who shares the Deputy CM's chair with Samrat Chaudhary, will be defending his Lakhisarai seat. A total of 9 women have been named in the BJP's first list of candidates. Among them are Bihar Minister for Animal and Fisheries Resources Renu Devi, who has been fielded from Betia. But the bigger buzz is outside the list. Allies Chirag Paswan and Upendra Kushwaha post identical tweets. Hindustani Awam Morcha Chief Jitan Ram Manjhi hints at rift, saying Nitish Kumar's anger is justified. उनका गुस्सा एकदम जायज़ है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। 1 ग्राम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। Meanwhile, according to NDTV's exclusive scoop, the BJP has strategized its candidate list, keeping a focus on young women leaders. Sources say the party is betting big on backward and marginalized communities. Well, as the political landscape in Bihar heats up ahead of upcoming elections, the spotlight turns to the convergence of cinema and politics. In a significant development, renowned folk and devotional singer Maithili Thakur on Tuesday joined the BJP in Patna in presence of state party chief Dilip Jaiswal. Her formal entry into politics comes amid strong speculation that she may be fielded from the Alinagar seat in the Darbhanga region. Listen in to what she had to say. छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। इस बार छठ पूजा अलग कैसे हो जाएगी आपके लिए?
मेरा बड़ा मन होता है कि छठ पूजा मैं अपने लोगों के साथ बिताऊं और ऐसा ही होने वाला है। मैं बिहार में ही रहती हूँ मोस्टली। छठ के समय पर अलग अलग जगह कार्यक्रम करती रहती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, अलग अलग घाटों पे जाती हूँ। तो बस इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। इस बार बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की और सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं बिहार की जो एनडीए सरकार है उससे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। एज अ यूथ मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो बस यही है कि उनका साथ देने आई हूँ। मोदी जी की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? उनके कॉन्क्लेव्स में बैठने में बड़ा आनंद आता है जब उनको सुनते हैं। तो एक बात नहीं, ढेर सारी बातें हैं, तो उनका बोलना बहुत पसंद है मुझे। उन्होंने आपका गाना भी ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, पोस्ट किया। जी, उन्होंने 2-3 बार पोस्ट किया है। मिलकर कोई बात कही थी कभी आपसे? ऐसे बोलते हैं, नमस्ते मैथिली, तैयारी कैसी चल रही है? तो जिस तरीके से वो सबसे कनेक्ट होते हैं तो अच्छा लगता है। Putting an end to days of speculation, Jan Suraj Party chief Prashant Kishore has ruled out contesting from Raghavpur, the home turf of RJD leader Tejasvi Yadav. His party, Jan Suraj, has instead fielded Chanchal Singh from the seat. Prashant Kishore had earlier indicated that he could not contest the election in which his Jan Suraj is fielding candidates in 240 seats of Bihar. During an interview last month, he had said, and I quote, "Deliberations are on in the party, and if a collective decision is taken that I too enter the fray, then, as I also said in that interview, it has to be Kargahar or Raghavpur." Well, that's all for today. For daily in-depth updates on everything shaping Bihar's political landscape, stay tuned to NDTV's Bihar Election Tracker.